नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 8 फरवरी 2023 बुधवार है। हम हर रोज़ की तरह आज भी निफ्टी का कल क्या रुख हो सकता है और अगले कुछ दिनों का क्या रुख हो सकता है, दोनों की बात करेंगे। पिछले कई दिनों से मैंने आपको बताया कि मेरे अनुसार हल्की तेज़ी का रुख है। उसके कारण भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको दिखाए थे। ये सब कारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम और आप दोनों समझ सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सोचता हूँ आप भी उसी तरह से सोचें। तो मैं आपसे सिर्फ अपने विचार साझा करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। सही तो मार्केट बताता है। देखिए, ना मैं कह सकता हूँ ना और कोई कह सकता है। मार्केट ही डिसाइड करता है उसको क्या करना है। हम कई बार बाज़ार के साथ सही रूप से चले जाते हैं, कई बार समझ में आता है कि हम बाज़ार के सामने खड़े हैं, वो हमारी भूल होती है। वो भूल वैसे नहीं है कि हम बिना समझ के खड़े हो गए। कई बार हम जो सोचते हैं बाज़ार उसके अनुसार नहीं चलता है। एनीवे, मैं आपको ये कह रहा था कि मैं आपसे अपने विचार साझा करता हूँ और मेरे अनुसार एक हल्की तेज़ी का वातावरण है। कल मैंने आपको बताया कि 17,650 का लो बना है। 650 के नीचे बाज़ार अगर आने लग जाए तो ये एक संकेत होगा कि हम लो को तोड़ रहे हैं और वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग बनती है। आज बाज़ार गैप से खुला। आज आरबीआई की रेट पॉलिसी भी थी, उसके बाद भी बाज़ार में कोई मायूसी नहीं आई। गैप से खुलने के बाद वो 17,800 आया करेक्शन करके और दिन भर यूं ही धक्का खाता रहा। 800, 880, फिर 800, 880, 810, 880 ऐसे करके दिन भर निकाल कर वहाँ बाज़ार अच्छे बढ़त के साथ बंद हुआ। लेकिन इंट्राडे में रेट अनाउंसमेंट के बाद कुछ नहीं आया, वो एक अलग बात है। पर कल जिन्होंने ख़रीद के रखा था और आज शाम तक या दोपहर तक या सुबह तक भी रखते, उनको बढ़त अच्छी मिल गई थी। इसमें एक बात है। बात यह है कि अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो ट्रेंड का बेनिफिट आपको कभी ना कभी, लाभ आपको कभी ना कभी मिलता है। अब ये आपके पास टेलीग्राम नहीं आता है कि कल 2:03 पर आपको ट्रेंड का लाभ मिलेगा, अब ट्रेंड पकड़ लो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ट्रेंड पकड़ के रखते हैं तो कभी भी उसकी और बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। अधिकतर ऐसा होता है ना मिले, वो कोई, मैं आपको कोई गारंटी तो दे नहीं रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि 17,350 के बाद से हल्के ट्रेंड का रुख तेज़ी का है। मैंने ट्रेंड पकड़ रखा था तो उसका आज गैप अप हुआ। रेट अनाउंसमेंट के बाद 800 के 850, 880 गया, तो उसका बेनिफिट एक मुझे मिल गया। आज इंट्राडे ट्रेड्स जो लोग करते हैं उनको क्या बेनिफिट मिला है वो बड़ा मुश्किल है कहना। कभी कभी तो विपरीत भी हो जाता है। पर ये बात मैं समझता हूँ, हमारे रिसर्च ये बताती है, मेरी रिसर्च ये बताती है कि ट्रेंड के साथ जब रहते हैं तो ओवरनाइट गैप्स का बेनिफिट उनको मिलता है। हर रोज़ मिलेगा ये नहीं है। अब आज आप कल सुबह ट्रेंड के साथ हो जाइए और शुक्रवार को आपको बेनिफिट नहीं मिले, फिर आप कहें ये तो सुदर्शन तो क्या कहता है, मुझे तो बेनिफिट मिला नहीं। ऐसा नहीं होता है। माने ट्रेडिंग इज़ है ना बिजनेस ऑफ लार्ज नंबर्स, बड़े बड़ी संख्याओं का बिजनेस है ट्रेडिंग। जिसका मतलब है अगर आप 100, 200, 500 ट्रेड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसमें कई ट्रेड ऐसे हैं जिसमें आपको ट्रेंड के साथ बहुत बड़ी बढ़त मिलती है। एक ट्रेड करके आप उसको सही और गलत समझना शुरू कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। आज बात है ना और ही कुछ हो गई। ये मेरे लिस्ट में भी नहीं था, पर शुरू होने के बाद कुछ भी कहा जा सकता है। चलिए, बात ये थी कि ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है। ये ट्रेंड कब कटेगा, ऐसे तो देखिए कभी भी कट सकता है, पर हम कल का स्तर लेके चलते हैं। 17,650 के नीचे अगर जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि अब ट्रेंड ख़त्म हो गया है और कोई मंदी का दौर शुरू हो गया है। ट्रेड कैसे करेंगे? अगर आप ओवरनाइट पोजीशंस रख रहे हैं उसकी कहानी दूसरी होती है। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो डिप्स पर ख़रीदना पड़ेगा। ब्रेकआउट्स पर ख़रीदने से, आज भी ब्रेकआउट पर ख़रीदते हैं तो क्या मिलता कहना मुश्किल है। तो कल के लिए रुख यही है कि 650 के ऊपर शार्प डिप, माइनर डिप, उसमें ख़रीदना बनता है। ये आप भी समझते हैं कि मैं अपने विचार आपको देता हूँ, मैं आपको कोई गारंटीज़ नहीं देता हूँ। कोई भी अगर गारंटी करता है ट्रेडिंग में तो गुड फॉर देम। मैं तो नहीं समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मैं कमेंट्स में देखता हूँ कि लोग झुंझला जाते हैं कि आपने कहा और हुआ नहीं। अरे मैं तो इतनी बार कहता हूँ और नहीं होता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसा है नहीं, आगे भी बहुत बार होगा। तो चलिए, लंबा वीडियो हो गया। कभी कभी आपके साथ बात करने का मन हो जाता है और रुका नहीं जाता।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is February 8, 2023, Wednesday. As usual, we will discuss the Nifty View for tomorrow and if possible for the next few days. Now, since last week, viewers who have been watching my videos know that I have been talking about an undercurrent of bullishness, mild bullishness. In one video which I made last week, I also explained why I am bullish. Now, this is not rocket science. It's not something special. It's not something that I know and no one else knows. ऐसा कुछ नहीं. It's not like that. Everyone understands it, and that is why I shared it in a video. This is how I am looking at the markets. Now, you must also understand that how I look at the markets doesn't mean everyone has to look at the markets like that. Far from it. We can approach the market in 100 different ways, and if we are disciplined, if we are systematic, all of us can make money. All of us can make money even though our approaches to the market, our views may be different. The market is such a generous being. But if we are not systematic, if we are not disciplined, if we trade randomly, if we don't do our homework, then you know what the market does to us. Most of you know it. Anyway, I share my views with you. Now, that it is not necessary that you may even agree to that views. It's just my thoughts. And my thought has been that we are in a minor undercurrent of an up move. Yesterday I explained that there was a small trading range, and that trading range can break on the downside, and that would be 17,650. So if this Nifty starts drifting below 17,650, then clearly that is a bearish sign. We should be looking to go short. Now today the markets opened with a big gap. Then that rate announcement was there, it was choppy, and then again after that big gap it fell down, it went up, but throughout the day it stayed above 17,800, which was the point at which we said that we will start looking at long positions. Now there's something I want to tell you. You know, reasonable and decent money is made if you take overnight positions. How do you take overnight positions? When you have an awareness of trend. Now, I have been talking about an uptrend for the last few days, so I carry overnight long positions. Now, it also means that every day those positions will not make money. Sometimes I carry a position and tomorrow it opens lower, and you understand that it's a losing proposition. But over a period of time, carrying a position in the direction of the trend makes money. Is not, again, we have done so much research. There are many hundreds of people all over the world, thousands maybe, probably thousands and tens of thousands who have done this research. All of them have come to the conclusion that trend makes money. Now overnight, now this, you know, suppose you are hearing me today and you say, oh, this is what he says, I must take an overnight position and it will make money. So tomorrow you take an overnight position. Let us assume that the trend remains up, and tomorrow you take an overnight position, and on Friday the market opens down. So you say this Sudarshan is a fool and he doesn't know what he's talking about. I took an overnight position and the market has come down, and now obviously I'm losing money. This fellow is an idiot. I may be an idiot. I'm not saying that part is wrong, and I may be a fool. I'm not, but that's not the way to approach trading. Trading is the business of large numbers. You cannot pick up one trade and say this or that. No. If you take 500 trades, then you will realize that there are some trades in those 500 that give you so much money if you are in the direction of the trend. That's how you capture a trend. You don't capture it on a day-to-day, trade by trade, one trade this way or that way basis. No, that doesn't work in trading. I explain all this to just share with you how I trade. I don't think it is relevant for tomorrow's Nifty view, but sometimes I just thought I'll share some other ideas also. What about tomorrow? The undercurrent is still upbeat. 17,650 remains the point at which we say this is not working out. Obviously you close long positions, and maybe I take short positions, maybe. But this has been a choppy ride. Now I can't tell the market just because I am bullish you start going up and every day you go up 150 points and take me there, wherever I want to be. It doesn't work like that.
The market is slowly inching upward. There is a message in this uptrend, and that is that this uptrend, this choppy uptrend, is not likely to the beginning of a new bull market. It's just an uptrend. It will finish somewhere. I don't know where. Maybe 18,500, maybe 19,000, maybe wherever. But when a bull market starts, it starts with jumps. It stuns everyone. This one is not stunning anyone. This one is going up, coming down, going up, coming down. So we are in an uptrend, as I think, but it's probably not the beginning of a new bull move. We'll see what happens. I think I've spoken a lot. Thank you for watching this video. And to summarize quickly, I remain upbeat, looking for a mild up move. And I've given you the stops when I will go either short or at least flat. Thank you for watching this video again. Jai Hind.